Friends, welcome to our channel Inhouse ERP. Today I am going to make a very good video on how to apply password in Excel Workbook. The main motive of this video is to protect the user data from unauthorized access, the work we have done in Excel. So let's see how to apply password. ये एक एग्जांपल है जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है. When we enter password, so now you see, then we can able to open the workbook of Excel. So इसी को I will let you all know कि how to apply a password on workbook. So first we create a new Excel workbook. इसको एक नेम दे देते हैं. नाउ यू सी कि अभी इसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है. So how to apply? Click on File, Info, Password, Encrypt with password. Click on it. यहाँ पर हम जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो डालेंगे. री एंटर पासवर्ड. ओके एंड just close the workbook by clicking save. Now you see कि जब नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा और जब हम पासवर्ड डालेंगे तो ये हमारे जो वर्क एरिया है उसको ओपन कर देगा. सो फ्रेंड्स, ये बहुत यूजफुल फंक्शन है एक्सेल का टू मेक आवर वर्क इन एक्सेल पासवर्ड प्रोटेक्टेड. तो इसे ऑफिस में आप यूज़ करें और इसका बेनिफिट उठाएं. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आप कोई वीडियो, कोई कंटेंट आप चाहते हो कि इस पे वीडियो बनाई जाए तो आप प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आप ईमेल भी कर सकते हैं. So please keep support this channel so that more useful content मैं इसी तरह आपके लिए लाता रहूं. Thank you very much.